Most of us know the formula of area and perimeter and still get the answers wrong. Why? Because we get confused between area and perimeter. अब यहाँ एरिया का फॉर्मूला लगाना है या पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमारे आंसर्स फॉर्मूले हमें पता होने के बावजूद गलत हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सारी कंफ्यूजन्स बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। ना सिर्फ हम फॉर्मूले रिवाइज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। और वीडियो के एंड में मैं एक गोल्डन रूल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आपकी ये कंफ्यूजन की एरिया पता लगाना है या पेरीमीटर, ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एरिया मींस द स्पेस इनसाइड अ शेप, किसी भी शेप के बीच की जो जगह है, पूरी ये बीच की जगह, दैट इज एरिया। एंड पेरीमीटर मींस बाउंड्री अराउंड द शेप। The area is space inside the shape and the perimeter is boundary around the shape. And what is the formula to find the area of a rectangle? Length into breadth. Length multiplied by breadth. And formula for perimeter is 2 into L plus B. Now let's start with the questions where we usually make mistakes. A rectangular garden has 20 meters length and 10 meters breadth. Ramesh wants to put a fence around it. Find the cost of fencing at 5 rupees per meter. Now do you know कि इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया या पेरीमीटर? पहले ध्यान से सोचेंगे कि हमें फेंस लगानी है रेक्टेंगुलर गार्डन के अराउंड। अराउंड, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर, नॉट द एरिया। एरिया उस गार्डन के अंदर का स्पेस होगा, हमें गार्डन के अराउंड फेंस लगानी है, तो हम पेरीमीटर पता लगाएंगे। सो फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर इज 2 into length plus breadth. Length here is 20 and breadth is 10. 20 plus 10 is 30 multiplied by 2. 2 multiplied by 30 is 60. That means perimeter is 60 meters. And the cost of fencing for 1 meter is 5 rupees, and the cost of fencing for 60 meters will be 60 multiplied by 5, which is equal to 300 rupees. So the answer is 300 rupees. Now let's take second question. A room is 8 meters long and 6 meters broad. How many square meter of tiles are required to cover the floor? Now, can you tell, will we calculate the perimeter here or the area? Yes, we will find the area here. We will calculate the area here. Why? क्योंकि फ्लोर पे टाइल्स लगानी है और टाइल्स तो पूरा फ्लोर कवर करेंगी। दैट मीन्स द स्पेस इनसाइड द रूम। सो वी विल कैलकुलेट एरिया हियर। And formula to calculate area is length into breadth. Length here is 8 meters and breadth is 6 meters. That means 8 6 are 48. 48 square meters. Area जब भी हमने कैलकुलेट करना है तो आंसर हमेशा हमें स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर, जो भी यूनिट है, स्क्वायर यूनिट में लिखना है हमने। So here the answer is 48 square meters. So viewers, keep watching till the end because I am going to give you a golden rule that will help you decide area or perimeter in any word problem. Now, next question is, a rectangular park is 25 meters long and 15 meters wide. Find the length of the boundary wall. Now you know boundary wall goes around the park. So again we will calculate the perimeter. And formula for perimeter is 2 into L plus B. L here is 25 and B is 15. Wide means width, which is equal to breadth, that is 15. 25 plus 15 is 40 multiplied by 2 is equal to 80. That means perimeter of the park is 80 meters. That means the length of the boundary wall will be 80 meters. Next question is, the area of a rectangular field is 96 square meters. Its length is 12 meters.
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। अब इसमें हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है और लेंथ गिवन है, हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ब्रेड्थ कैलकुलेट करनी होगी। फॉर्मूला फॉर एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट? And to calculate breadth, the formula will be area divided by length. Area here is 96 and the length is 12. So 96 divided by 12 is equal to 8. That means the breadth of that rectangular field is 8 meters. Now we will calculate the perimeter. Formula for perimeter is 2 into L plus B. L is 12 and B is 8. 12 plus 8 is 20. 20 multiplied by 2 is, or 2 multiplied by 20 is 40. That means perimeter of the rectangular area is 40 meters. Now one last example. After that we will come to that golden rule. The perimeter of a rectangle is 36 centimeters. Its length is 10 centimeters. Find its area. अब हमें पेरीमीटर भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है। ब्रेड्थ का हमें पता लगाना पड़ेगा, ब्रेड्थ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ। पेरीमीटर हियर इज 36. 36 divided by 2 minus 10. 36 divided by 2 is 18. 18 minus 10 is 8. That means breadth is 8 centimeter. Now we will find area of rectangle. Formula is L into B. L here is 10 and B is 8. 10 multiplied by 8 is 80. 80 square centimeter. क्योंकि एरिया है तो आंसर हमें स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखना है। Now here is that golden rule that you must remember. If the question talks about fence, boundary, wire, rope or walking around, then we will find perimeter. Then we will calculate perimeter. If the question talks about tiles, carpet, grass, painting, covering, then immediately think about area. That means we will calculate area in these conditions. If you remember this golden rule, you will never confuse between area and perimeter again. Now answer this in comments. A rectangular table is 5 meters long and 3 meters wide. Cloth is needed to cover the top of the table. What will you find? Area or perimeter? So remember, formulas are easy, but understanding the question is more important. If you found this video helpful, then like it, share it with your friends, and if you have not subscribed yet, subscribe to my channel now. Thank you for watching.